Hi everyone, how you guys doing today? I hope you are fit and healthy. So आज की रेसिपी है पैनकेक्स जो कि होल व्हीट पैनकेक्स है और इंग्रेडिएंट्स भी आपके घर पे ही अवेलेबल होंगे। तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है और इसमें मैंने सिनेमन एंड कार्डिमन भी डाले हैं। तो आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर यू गोना लाइक इट और आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। Hi everyone, how you guys doing today? I hope you are fit and healthy. So आज की रेसिपी है पैनकेक्स जो कि होल व्हीट पैनकेक। तो चलिए पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बटर मिल्क लिया है। आई मेड इट आउट ऑफ कर्ड। सो अगर आपके पास बटर मिल्क है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आपके पास विनीगर है तो आप विनीगर यूज़ कर सकते हैं। और on the other hand I have whole wheat flour. First I will make dry ingredients, so I will add 2 tablespoons of sugar in it, just a little bit salt, नमक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें लिया है बेकिंग पाउडर, जस्ट क्वार्टर स्पून ऑफ बेकिंग सोडा। Mix well. So I'm gonna add little bit cinnamon powder for the good flavor and the cardamom powder and little bit sauce. We'll mix well. So अब हमारे wet ingredients है यहाँ पे। बटर मिल्क आप आउट ऑफ मिल्क से भी बना सकते हैं, उसमें विनीगर ऐड करके। ओके, तो अब मैं इसमें एग डाल दूंगी। सो आई विल पुट 2 eggs in it. I have added 2 eggs and I will add melted butter 2 tablespoons in it and I will just whisk well. So I'm gonna put wet ingredients to the dry ingredients and I will whisk together so that there is no lumps. See friends, the consistency should be like this. So on the other hand, the pan is on the gas and the gas is on the maximum. So I will apply just a little bit butter to it. Now I will put gas on medium. So I will put lid on for 1 minute. Then we'll check. It's almost 1 minute. Let's see. Wow, they have turned into fluffiness. So, very carefully. See friends, they are almost done. Let them sit for 1 minute more. Now I will serve it. I have put it in the plate and I will pour maple syrup. Make sure maple syrup should be with the good quality because we need healthy food, right, to stay healthy. I put little bit butter as well. Wow, they look delicious and flavored as well. Let's try it. See the fluffiness guys. तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। आई एम श्योर यू गोना लाइक इट